Figure of speech টা অধা আইতলা না কোন figures of speech দেখলাম সেটা তো রହୁଛି রেকর্ডিং তো ଅଧାଣିଆ କ୍ଲାସ ଟା ତା କଭର କରି ଦେଇଛି ଚାପ୍ଟର କୋଟା ହେଲା କେତେଟା ଡିକ୍ଟେଟ ହେଇଥିଲା ନିବେଦିତ एग्जाम सब इंग्लिश मार्क पाइल हाउ मच यू हैव सिक्योर्ड लिमा 40 you you निवेदिता you how much you have secured वर्षा फिरदौस लिप्सा 36 you 28 you 33 what's your name Sumon you Rahul 14 you 39 what's your name Subham Sahu Saurabh na Gaurav you are suffering from fever what's your name you have appeared the exam or not 21 Pradhan how much you have secured in English $11 other students are yet to come students we have to certain extent completed figures of a speech or poetic devices whatever you can put how many points have been detected apostrophe only 4 future tense predicted exam का सॉरी तो उठावे figure of speech का overnight tense pattern I get to see it completing ठीक है we will start with the future tense miscellaneous okay students we will start with simple future tense heading simple future tense chapter is vital for everybody else when we punctuate ourselves in tense pattern thereafter narration passive voice conditional clause so on and so forth are getting to be completed very nicely so go through the tense pattern if any doubt you can ask me again and again to make your concept clear simple future tense is used first point to describe an action which is yet to happen to describe an action which is
yet to happen. Which is yet to happen. Example, I shall go to Agra. I shall go to Agra tomorrow. Gaurav, you need its repetition. Do you need its repetition? Repeat karibe. I shall go to Agra. AGRA. I shall go to Agra tomorrow. Good. I am going to সেটা আমি application में करें. Application. এটা হলো theoretical, সেটা হলো application. আর পরে পরে যেটা করিবা application টা exercise. I shall যে কিন্তু তুমি তাও কোন করিব যদি তোমার tense pattern exercise করিবা. এইটা খালি tense যেহেতু আমি ইউজ করছে tense chapter এনে বর্তমানে কমপ্লিট করুছে কিন্তু আর actually application হচ্ছে present progressive. ହେଲା କି সেটা আমি exercise ରେ কমপ্লিট করিবা. Next students, লেখ simple future tense जोटा कहउथिला लेमा वर्तमान simple future tense लेख. Simple future tense can be expressed in many ways. Simple present tense can be expressed, simple future tense can be expressed in many ways without using verb, in the simple future tense. Excuse me. Point 1. By using simple present tense, example, by using simple present tense. Example lekha. Our examination begins on 4th March. Our examination begins on 4th March. এটা হলো rule 1. Rule 2 রে লেখা by using present continuous tense. By using present continuous tense. By using present continuous tense, example, I am leaving for Germany. I am leaving for Germany tomorrow. I am leaving for Germany tomorrow. I got example lekha. They are planning. I got example lekha. They are planning to attack us. They are planning to attack us. Rule number 3 lekha. By using am, is, are going, plus infinitive pattern. I would like to repeat, students. By using am or is or are, going plus infinitive pattern. Example, he is going to resign. He is going to resign from the committee. He is going to resign from the committee. He is going to resign from the committee.
Another example, I would like it is going to rain. It is going to rain. After some time, it is going to rain after some time. Fourth rule lekha. By using, बर्तमान देखा पिले हमारा सब्जेक्ट है गला ही परे हमें इम्प्लीमेंटेशन कले कौन आम इज आर ए ऑप्शन रू कोड आसीबो इज परे गोइंग रही गला गोइंग टा होची हमर एक्चुअली कंपलसरी फॉर्मेट रे प्रोग्रेसिव फॉर्मेट ही इज गोइंग अच्छा इन्फिनिटिव होची कौन 2 + v1 2 + v1 जोटा को ताको हमें को इन्फिनिटिव पैटर्न इन द सेंस टू रिजाइन he is going to resign from the committee committee से resign दबा पे जाऊँ कोटा कहला हाँ बेयर इन्फिनिटिव जोटा होची सेटा हमर हमें से चैप्टर टा को कवर अप करबा जेरोन चैप्टर रे आसा जेरोन गोटे चैप्टर अछि सेतिर हमें कवर अप करबा ये चैप्टर सरी जाऊ मते कहबो सर जेरोन चैप्टर पढाई दियो एटा बियॉन्ड सिलेबस किंतु से चैप्टर रे नियर अबाउट 37 रूल अछि एटा तो हायर लेवल कॉम्पिटिटिव पे दरकार किंतु हमें ताको पढाई दबा जेरोन कंकर्ड एटा सब टर्मिनोलॉजी अछि इंग्लिश लिटरेचर आ ग्रामर हैला बुक नहीं जेबो मो पाकर अछि बुक नहीं पढ स्पेशली गोटे गोटे सब्जेक्ट ऊपर चैप्टर ऊपर बुक अछि गोटे गोटे चैप्टर ऊपर गोटे गोटे बुक किंतु एया गोटे कथा कोन कि वर्तमान प्लस 2 लेवल ले तमर सेटा निडी नु हमर कॉमन बुक भी चलुची किंतु नरेशन पे गोटे बुक वॉइस चेंज पे गोटे बुक गोटे सब साथी प्रकाशन प्रिंट करूची दास एंड दास प्रिंट करूची जदि जो माने चाहेबो यू कैन टेक इट एंड रिटर्न टू मी नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोर्थ रूल लेख by using am is are जोटा बर्तमान हमर अंशु कहउथिला by using am is are plus infinitive pattern एठी गोइंग टा को हमें इंप्लीमेंट करूना इन्फिनिटिव पैटर्न रे केमिति कंप्लीट होउची इन्फिनिटिव माने कोन देखो हमें ऊपर कहले ही इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द कमिटी हमें जदी आईएनजी फॉर्मेट बा गोइंग नॉले यूज करिबा ही इज टू रिजाइन फ्रॉम द कमिटी he is to resign from the committee एवं एठी जदी वर्तन करिबा by using am is are plus infinitive pattern I am to example lekho I am to see the doctor today I am to see the doctor today I am to see the doctor today जोटा का मैं कहि पर थांते I am going to see the doctor हैला जे जते थरो न बुझी परछ आ परे परे में एनालिसिस करबे एक्सरसाइज आउरी कांसेप्ट क्लियर होबो गोटे दरकार पड़ले टेस्ट करनबा 30 मार्क रो प्रेजेंट रू 10 पास्ट रू 10 फ्यूचर रू 10 कांसेप्ट क्लियर हो जिवो मार्क कम बेसी अधिक हमर असुविधा नै एग्जाम कले त मुटे पढिया को इंटरेस्ट लाग नेक्स्ट लेखा रूल 2 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एटा रूल 1 सिंपल फ्यूचर रे सब गुडा कथिला रूल 2 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस tense is used future continuous tense is used rule 1 lekha to describe an action that will be continuing at a given point of time in future repeat to describe an action that will be continuing at a given point of time in future
Example, tomorrow at this time, tomorrow at this time, tomorrow at this time, I shall be taking my tests. I shall be taking my tests. I shall be taking my tests. I got example lekha. What will you what will you what will you be doing? What will you be doing this evening? What will you be doing this evening? आज संध्या रे तुम्हें कौन करूथिलो कौन तमर जॉब का टास्क अछि टू परफॉर्म योरसेल्फ नेक्स्ट स्टूडेंट्स द फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जगह इंप्लीमेंटेशन हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हैला तापर लिखा द फ्यूचर परफेक्ट टेंस the future perfect tense is used to describe an action to describe an action to describe an action that will be completed to describe an action that will be completed ऊपर लिखले continuing एटी कोन लिखले completed that will be completed at a given point of time at a given point of time at a given point of time in future at a given point of time in future example by the end of this month by the end of this month by the end of this month we shall have shifted to our new house we shall have shifted to our new house by the end of this month we shall have shifted to our new house यही मासर शेष बेलू आम आमर घरटी शिफ्ट कर सारिथिबु we shall have shifted to our new house तापर लेखा the future perfect continuous tense the future perfect continuous tense future perfect continuous tense lekha is used future perfect continuous tense is used to describe an action to describe an action that will be in progress progress even after a point of time in future even after a point of time in future आराम से बोतल टान तुम पानी बोतल डाल लो राहुल बाग से पानी बोतल क्या मिला इंडिया हुई हाथ में
I have been doing. पानी क्या बॉटल के और एग्जांपल लेट बुझौछ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये टेंस रे प्रकृति रे पिला हमें रूल रेशनल लिखुचे किंतु आर वर्तमान एप्लीकेशन ना यूज हो ना काहे कोन देख हम एग्जांपल दउछि by the end of this year by the end of this year by the end of this year I shall have been living I shall have been living I shall have been living in Kolkata for 4 years in Kolkata for 4 years by the end of this year यही मास वर्षर शेष बेल को I shall have been living in Kolkata for 4 years तामाने कोलकाता रे मो रहिबाटा 4 वर्ष होई आसीथिबो वर्ष गला 2 वर्ष गला 3 वर्ष गला एई मास एंड बेल को तामाने आ अल्प दिन अछि आज तो 11 हे गला आमे 19 दिन पर गोटा पुनी नुवा जुग अध्याय सृष्टि हो तनो मास एंडिंग बेल को माने केक कटा बेल को डिसेंबर 25 बेल को मोर 4 वर्ष होई जाई आसीथिबो प्रथम वर्ष रहिली कंप्लीट हैला द्वितीय वर्ष को कंटिन्यू करली दूसरे वर्ष कंप्लीट हैला आपण मानकर जो एज टा सेटा भी कंटिन्यूइंग तमर 17 पर्टिकुलर कार नथिबो 16 कार नथिबो 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस ए गली तमर एज टा हमें कोन करू काउंट करी करी चालू सो द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन that will be in progress even after a point of time in future by the end of this year I shall have been living in Kolkata for 4 years it would they reach note re this tense is no longer used in use nowadays वर्तमान ए टेंस रा एते एप्लीकेशन नाही ताले पहिले आपण मानको एग्जांपल टिके दबा देखिबा टेस्टिफाई करिबा आपण मानकर नॉलेज फर्स्ट एग्जांपल देखो पहिले rewrite heading दियो rewrite the following sentences rewrite the following sentences last line ने जो दी जण बस तुम ना कोन जण का चंदन का ना आसेनी तो ना कोन बापा विघ्नेश मृत्युंजय तो ना
दीमन तमे मोसा नाच करथलो पिकनिक ना ये मोर पूरा सांग हो जाइबे बेस्ट फ्रेंड फोटो फोटो उड़ची हां अबिले लेखा rewrite the following sentences changing the verbs into past tenses आज पांचटा जमा देवी बेसी देवी नहीं फर्स्ट लेखा he does everything he does everything he can to show us say it he does everything he can to show us to show show us that he is a true patriot he is a true patriot second question he runs so fast Gaurav he runs so fast that he runs so fast that he is soon out of breath. He is soon out of breath. breath breath. He is soon out of breath. एते जोर से दौड़ला जे आ लास्ट को धोई से निश्वास प्रश्वास नहीं पाइला प्राण विकल जने जने दौड़ंतनी तमे देखिबो रनिंग होउतिबो माने आगुरु नर्वस फील करिवे एई समय हुए नि कि जो स्कूल रे सब स्पोर्ट्स दौड़ दौड़ जाउथिबे ट्रैक पाखा पाखा गेला हार्ट फेल होला बेले सुडु ग्लूकोज आनी कर दियो ग्लूकोन डी कागज रे टेपुट तो पुणी स्मार्ट हे उठी जिवे आ जणे जणे जदी देखिबे जे मु थर्ड रेंज भीतर अछि देह किछ होन दबो तांकर जदी 6 7 बेल को रह जाइतिबे से ट्रैक पाखा गेला पूरा नर्वस हे जिवे मो छाती कोन होउची मो पेट कोन होउची सेटा होची कोन कि हमर आउट ब्रेथिंग नेक्स्ट लेखा I don't see how you will be able to do this. I don't see how you will be able to do this. He eats a good breakfast. He eats a good breakfast and then rings the bell for his horse. And then rings the bell for his horse. Oh, ये चार्टा हल्ला कौन की actually changing from verbs into past tense. It's ITS. तापर लेखा पिले changing verbs into present tenses. Changing verbs into present tenses. ये जो sentence पड़ा दिया होगा present tense को convert करिबो. First लेखा he gave his officer no answer. He gave his officer no answer. He gave his officer no answer. He promised that no one would be harassed.
he promised that no one would be harassed. তারপরে লেখো she would come. She would come. মৃত্যুঞ্জয় শুভুছি? She would come if she could. If she could. She would come if she could. Chatala. I would like. I did not hear what he said. I did not hear what he said. What he said. Chatala লেখো। লেখা পেলে I left or had left. হ্যাঁ? আচ্ছা নেক্সট ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ କୋଉଠି appropriate verb ଲାଗିବ ଅପସନ ଦଉଛି I left or had left the school last year. I left or had left the school last year. I left or had left the school last year. তারপরে লেখো নেক্সট পয়েন্টটা There has been or was a famine in Bengal in 1982. There has been or was a famine in Bengal in 1982. In Bengal in 1982. তারপরে লেখো He sat or sit in his room. He sat or sit in his room writing. He sat or sit in his room writing. ये रूल टा एक्सरसाइज गुड़ा ठीक है ମୁଁ କେତେଟା ଦେଇ ସାରିଲିଣି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ I made him to do or do this. 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 To do this. Last question লেখা I made him ডাকিছি আচ্ছা চারটা হলা তিনটা হলা চারটা হলা 12 ହେଇଗଲା total complete. Try to complete it by your appointed time. Mrityunjay and what na Duman. Spelling करो DIMN DIMN MAN দিব